Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain the National Health Policy of India, including the major policies in it, that is 1983, 2002 and 2017. Let's understand how India's health system has evolved over time. So first we will discuss the introduction. National Health Policy. The idea of health for all aimed to provide basic health services to every citizen. However, several challenges made this difficult, like poor implementation of health programs, the shortage of resources like doctors, medicines, and infrastructure, unequal distribution of health services, or lack of proper planning and coordination. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसने रिकॉग्नाइज किया इन प्रॉब्लम्स को एंड इट ऑब्जर्व डिफिकल्टीज इन डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स. It also realized the need of a well organized and structured policy to improve the system. So they form a committee to address these concerns. A committee was formed to review the health sector. Its main function was to analyze the existing health system, to identify gaps and weaknesses, and to recommend necessary improvements. So all these steps led to the development of National Health Policy, which aimed to strengthen healthcare services, ensure better implementation of programs, and achieve the goal of health for all effectively. The Alma-Ata Declaration of 1978 plays a major milestone in this, which emphasized reducing health inequalities, strengthening primary health care, providing health services to all, and all this lead India to develop its first national health policy. The joint WHO UNICEF इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो 1978 में एट अल्मा एटा हुई उसने डिक्लेयर किया द एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वालिटीज इन द स्टेटस ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल people, particularly between developed and developing countries, as well as within the countries in politically, socially, and economically unacceptable. जो अल्मा एटा डिक्लेरेशन हुई उसने बोला कि बहुत डिफरेंस है हेल्थ कंडीशंस में उन लोगों की जो डेवलप कंट्रीज में रहते हैं और उन लोगों में जो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं और इवन सेम कंट्री में भी जो ग्रुप्स हैं उनके हेल्थ कंडीशंस में बहुत डिफरेंस है लाइक पुअर एंड रिच पीपल हैं तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर हेल्थ स्टेटस. तो ये जो डिफरेंसेस थे ये फेयर नहीं थे, एक्सेप्टेबल नहीं थे क्योंकि ये सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे थे. दे आर अफेक्टिंग द सोसाइटी मीन्स दे आर अफेक्टिंग सोशली, दे क्रिएट इनइक्वालिटी इन पावर एंड डिसीजन, सो दे आर अफेक्टिंग पॉलिटिकली and they impact growth and productivity, so they are affecting economically to the. So the first national health policy was evolved, that is National Health Policy 1983, which was introduced by the Ministry of Health and Family Welfare. और उसका मेन फोकस किस पे था? प्रिवेंटिव केयर पे, क्योंकि हमने डिजीजेस को अवॉइड करना था. प्रमोटिव केयर पे ताकि इंक्रीज कर सकें हम हेल्दी लाइफस्टाइल. पब्लिक हेल्थ सर्विसेज पे, रिहैबिलिटेशन पे हमने हेल्प करना है पेशेंट्स को टू रिकवर. इसका स्पेशल फोकस था प्राइमरी हेल्थ केयर पे, स्पेशली इन रूरल एंड रिमोट एरियाज. सो इंडिया ने अपनी फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो थी वो बनाई 1983 आफ्टर 36 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, जो मेन गोल्स थे कि एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज. इसने फोकस किया कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो असेसेबल हो टू कम्युनिटी एंड इट एम टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज दैट आर लिंक्ड टू हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन. सेकेंड ऑब्जेक्टिव था इसने प्रायोरिटाइज किया हेल्थ को. ठीक है, इसने रिकॉग्नाइज किया कि हेल्थ एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. जो हेल्थ है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट का भी. इट प्रायोरिटाइज्ड एरियाज सच एज न्यूट्रिशन, वाटर सप्लाई, न्यू सैनिटेशन, environmental protection and immunization जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को. देन कम्युनिटी कोऑपरेशन, इन्होंने encourage किया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन हेल्थ प्लानिंग. देन ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी इट कॉल्ड फॉर द इंक्लूजन ऑफ जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे हमारे मेडिसिन के उन सबको इन्होंने इन्वॉल्व किया. स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी इसने एम किया टू स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. Then some key features are there in National Health Policy 1983. They focused on the development of primary health care services
प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इन्होंने डेवलप किया, ठीक है। दे क्रिएट रेफरल सिस्टम फ्रॉम स्मॉल क्लिनिक्स टू बिग हॉस्पिटल्स। इन्होंने यूज किया ट्रेन्ड हेल्थ वॉलंटियर्स को, और स्ट्रॉन्ग फोकस था हमारी रूरल हेल्थ केयर पे। एंड दे ऑल्सो promote प्राइवेट सेक्टर फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट, ताकि गवर्नमेंट सेक्टर पे बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाए। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। बाय द एंड ऑफ 2000 सेंचुरी ये क्लियर हो गया था कि जो गोल है हेल्थ फॉर ऑल, उसको हम 2000 AD तक नहीं अचीव कर सकते, ठीक है। द ऑब्जर्व प्रोग्रेस सजेस्टेड दैट हमें इस कुछ नए और एडिशनल स्ट्रेटजीज की जरूरत है, और कुछ नए साइज की इंटरवेंशंस की जरूरत है, ताकि हम अचीव कर सकें एन अनएक्सेप्टेबल हेल्थ ऑफ द कंट्री। इसके फेलियर के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे बायस्ड एंड पुअर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी रीजन्स में जहां पे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है। देन वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। So, after the shortcomings or limitations of National Health Policy 1983, a revised policy was introduced in 2002 to overcome earlier gaps and address growing population needs. So, National Health Policy 2000. The goals for National Health Policy 2002, they are set for the next 2 decades. जिसमें फर्स्ट था इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। हमारे पास बेटर सर्विसेज होनी चाहिए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ट्रेन डॉक्टर्स एंड नर्सेज की, और बेटर हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन होनी चाहिए। सेकेंड था इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ। जो गवर्नमेंट है वो एम करती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो हेल्थ केयर पे स्पेंड करना है, ताकि हम हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स को बिल्ड कर सकें, प्रोवाइड फ्री और अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, improve कर सकें फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। देन थर्ड गोल इज स्ट्रेंथन द हेल्थ केयर सिस्टम। इस गोल का फोकस था कि हमने एंटायर सिस्टम है, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हमने उसको स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, जो हमारी हॉस्पिटल्स PHC CHCs हैं, बेटर सप्लाई होनी चाहिए मेडिसिन की एंड इक्विपमेंट्स की, एक स्ट्रॉन्ग रेफरल सिस्टम होना चाहिए ताकि प्राइमरी सेकेंडरी टू टर्शरी केयर पे फोकस किया जा सके, ensure smooth functioning of healthcare services. Then the fourth goal is improve governance. जो गवर्नेंस मीन्स हाउ द हेल्थ सिस्टम इज मैनेज, हम मैनेज कैसे करेंगे उसको, वो इम्प्रूव करना था हमने। देन बेटर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज होनी चाहिए, और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, so it reduce the corruption and mismanagement. Then the fifth goal is ensure accountability. Accountability means making sure people in the system are responsible for their work. जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है या ऑफिशियल्स हैं, मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज प्रॉपरली, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स और टेकिंग एक्शन इफ सर्विसेज आर पुअर। सो जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 थी, इसने एम किया हेल्थ केयर को बेटर, स्ट्रॉन्गर, वेल मैनेज्ड और मोर रिस्पॉन्सिबल बनाने में, while increasing government support. So next is the key features of National Health Policy 2002, in which the first one is increased health expenditure from 0.9% to 2% of GDP. पहले क्या था कि गवर्नमेंट बहुत ही थोड़ा अमाउंट जो था हेल्थ पे स्पेंड करती थी, दैट इज 0.9% ऑफ द टोटल GDP. But National Health Policy 2002 it aimed to increase this to 2%. ज़्यादा फंडिंग होएगी तो बेटर हॉस्पिटल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर डॉक्टर्स एंड स्टाफ, एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर पीपल. नाउ द सेकेंड वन इज फोकस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर. जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ केयर है, दैट इज PHC एंड सब सेंटर्स. तो इसने फोकस किया बेसिक ट्रीटमेंट पे, इम्यूनाइजेशन पे, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ पे, जिसकी वजह से क्या था, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्पेशली इन रूरल एरियाज. देन द थर्ड वन इज मोर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. गवर्नमेंट एनकरेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स टू टेक पार्ट. इसका बेनिफिट था कि इसने बर्डन था जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे उसको रिड्यूस कर दिया. पेशेंट्स हैव मोर ऑप्शंस who can afford the treatment of private sector, improve availability of services. Then the fourth one is rational use of medicines, ensures medicines are used properly and safely. It focused avoiding overuse and misuse of drugs.
to prescribing correct medicines in correct doses and reducing unnecessary costs. Then the fifth one is strengthening traditional medicine system. Promotion of Indian system like Ayurveda, Yoga, Unani, and Siddha. It aimed to integrate traditional and modern medicine, provide more healthcare choices, and use cost-effective treatments. Next is nursing and human resource focus of the National Health Policy 2002. इन्होंने कुछ nursing initiatives लिए to improve nurse to doctor ratio. This means increasing the number of nurses compared to doctors. क्यों? क्योंकि nurses play a key role in patient care, better ratio, better patient monitoring and care quality. Or it reduces the workload on doctors. Establish training institutions, setting up more nursing schools and colleges. It will lead to trained, more qualified nurses, improve skills and knowledge, and meet the growing demand of healthcare workers. And third, what it did, it decentralized the training programs. Training is provided at the local or regional levels, not just in big cities. इसका benefit था easier access to training in rural areas, more locally trained health workers थे और better services in remote regions. इसके अलावा कुछ और other initiatives थे, that is telemedicine, use of technology to provide healthcare from a distance. Like patients थे जो गांव में रहते थे वो कंसल्ट कर सकते थे डॉक्टर्स को, मतलब जो शहरों में थे, थ्रू वीडियो कॉल्स. इसने क्या किया, इम्प्रूव किया एक्सेस इन रिमोट एरिया में हेल्थ केयर का. डिजीज सर्विलेंस, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन. इसका पर्पस था अर्ली डिटेक्शन ऑफ आउटब्रेक्स, क्विक एक्शन टू कंट्रोल डिजीजेस like tracking spread of infections like dengue या tuberculosis. Then hospital accreditation, certification of hospitals based on quality standards. इसने ensure किया safe and standard healthcare services को, better facilities and patient care को, और एक trust बनाया among patients. Then the fourth one is medical ethics regulations. It ensures doctors and healthcare workers follow ethical practices, जिसकी वजह से ऑनेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी एंड नो एक्सप्लॉइटेशन और माल प्रैक्टिस. इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पेशेंट. So the National Health Policy 2017 was introduced to make healthcare in India accessible, affordable, quality-based and equitable, that is fair for everyone. And its main aim is universal health coverage for all citizens. So the main goal of National Health Policy 2017 is to achieve the highest level of health and well-being for all citizens without financial hardship. Then the objectives of National Health Policy 2017. The first one is progressively achieve universal health coverage. Means everyone should get quality healthcare services. No one should suffer financially due to medical expenses. इसमें आता था free and affordable treatment, access to essential medicines and services, or coverage for all sections of society. Then second one is reinforcing trust in public healthcare system. बहुत से लोग ऐसे थे जो प्रेफर करते थे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को. क्यों? बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट सर्विसेज. तो ऑब्जेक्टिव था कि हमने फोकस करना था इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ensuring availability of doctors, medicines and equipments, and providing respectful and reliable care. Then the third one is align the growth of private health sector with public health goals. Private hospitals play a big role in healthcare. So government aim to regulate private sector activities. इन्होंने ensure किया कि वो follow करें national health priorities को and make services more affordable and ethical. इसकी वजह से क्या हुआ? It creates a balanced system where both public and private sectors work together. Then the important targets. The first one is increase life expectancy to 70 years, which aim to help people live longer and healthier lives, which is achieved by better healthcare, nutrition and disease control. Then the second one is reduce maternal and infant mortality, lower the number of deaths of mother during pregnancy, childbirth, infants, which is done through better maternal care, institutional deliveries, vaccination and nutrition. Third one is control major diseases, focus on controlling diseases like tuberculosis, HIV, malaria,
through early diagnosis, proper treatment, and awareness and prevention programs. Then the fourth one is improve immunization coverage. Ensure more children and adults receive vaccines, which will protect against serious diseases and reduce mortality. Then the fifth one is increased health spending to 2.5% of GDP, which was in previous plan, it is 2% of GDP. So government plans to spend more on healthcare, which will lead to better facilities, more staff, and affordable services. So next is the policy thrust areas, in which the first one is preventive and promotive health. Focus on preventing diseases rather than only treating them. It includes healthy lifestyle, regular checkups, and awareness programs. The second one is clean environment under Swachh Bharat Mission. It promotes cleanliness and sanitation, which will help in preventing infections and diseases. Then the third one is better nutrition and lifestyle, which will increase balanced diet, physical activity, reduces lifestyle diseases like diabetes and obesity. Then the fourth one is control of tobacco and substance use. It will reduce use of tobacco, alcohol, and drugs, which will prevent serious health issues like cancer and heart diseases. Improved healthcare infrastructure, that is, build and upgrade the hospital, clinics, and medical colleges. It will ensure better access and quality care. Then the sixth one is digital health system and surveillance. It is used technology for recording, that is electronic health records, telemedicine for disease tracking. It will help in efficient healthcare delivery and early detection of the outbreaks. Then the eighth one is strengthened surveillance. Strengthened surveillance means improving the system of continuous monitoring, detection, and tracking of diseases in the population. So now we will have a brief review of the national health policy. So first of all, there is need for the health policy. So the Alma Ata Declaration in 1978 decided to formulate health policies according to the situations of the countries. So the National Health Policy 1983 was formulated in India, which focus on primary health care, preventive and promotion, and rural health services. Then the limitations of this policy is health for all not achieved, inequality and poor access. Then National Health Policy 2002 was formulated, and it focused on improved quality of care, increased funding, private sector participation, and strengthening system. Then need for further improvement, National Health Policy 2017 was formulated, and it focused on universal health coverage, quality and affordable care, preventive and promotive health, and digital and strong health system. The policy thrust areas of a 2017 policy, National Health Policy, was increased in investment from 2% to 2.5% of GDP, clean environment, healthy lifestyle, disease prevention, reduced inequalities, and the final goal was health and well-being for the all to achieve. Thank you.